Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I wish you will be enjoying the best of health. I welcome you in my class that is in English for grade 4 and we are learning unit number 14 and its title is A Good Citizen. Yes, my dear fellow teachers, I have divided this chapter, this lesson according to these lectures and according to these lesson plans. If you can change, if you are not feeling easy, so you can change this lesson plan according to your convenience. Okay, now I am going to tell you how I have divided this lecture according to lecture division. Lecture number 1 under the title of grammar, we will learn about demonstrative pronoun and we will cover up page number 113. And our student learning outcomes will be construct sentences beginning with words that point to something, i.e. this, that, these, those, it, etc. to describe pictures, persons, places, things, etc. And yes, my dear teachers, our second lecture would be under the title of grammar. We will learn about regular and irregular verb and we will cover up page number 112. And its SLO will be recall, articulate and use forms of more common regular and irregular verbs, i.e. base, FES, present participle, ing, past and past participle forms, and forms of be, do, and have as regular verbs. So this will be SLO for our second lecture. So yes, my dear teachers, our next lecture, lecture number 3 under the title of grammar, we will learn how to use hyphen in a sentence in punctuation marks and we will cover up page number 111. And its SLO will be recognize and use full stop with some abbreviations, apostrophe with contractions and hyphen to join two words that act as one unit. So our next lecture, lecture number 4, under the title of pronunciation skills, we will learn about intonation and we will cover up question number 4 on page number 111. And its SLOs are listen to and identify intonation patterns, rising and falling in sentences. Recognize and use the conventions to mark these intonation patterns. So this will be the SLO of our next lecture. And lecture number 5, what we will read? We will read poem with rhyming words, stress, rhythm and intonation and we will cover up page 108. So yes, my dear students, and what will be the SLO? Produce in speech and practice appropriate patterns of rhythm, stress and intonation of English language by listening to stories and poems read aloud in class. List rhyming words and write a poem. So this will be the SLO for our lecture number 5. So now in lecture number 6, under the title of comprehension, we will cover page 109 and 111. And in this way, we will cover up our SLO, apply while reading strategies to interact with text to generate questions to understand text. And the next SLO, copy and take dictation of words studied in class. So next, lecture number 7, we will learn about reading maps, how we can read a map and we will cover up page 113 and its SLO will be read and use symbols and directions in a picture story map. And the next will be read simple keys, legends on maps. This will be the SLO for our next lecture 7. In lecture 8, we will learn under the listening and speaking skills. We will cover up question number 8 on page number 114, how we can engage in a conversation. And its SLO will be demonstrate conventions and dynamics of oral interactions in groups to engage in conversation, my dear teachers. So these 8 lectures we will cover, inshallah. So next, we are going to start that. What is our open your book, my dear students, page number 108. Unit number 14, a good citizen. Ek acha shehri. So we are going to learn about that. Its theme is participatory citizenship and its sub-theme is effects of littering and damaging surroundings. So citizenship के बारे में बेटा हम पढ़ेंगे. Participatory citizenship means
कि हम अपनी शहरियत का हक कैसे अदा करते हैं, हमने कैसे अपने मुल्क को, अपने इलाके को गंदगी से पाक रखना है। लिटरिंग मीन ये जो हम कूड़ा फेंकते हैं, बिकॉज इस लिटरिंग की वजह से कैसे हमारे इर्द गिर्द का माहौल तबाह हो रहा है। सो आज हम इस चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 108। आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय लेक्चर, माय डियर स्टूडेंट्स। आर यू रेडी? Okay, good. So let's start. A good citizen always does a good deed. A good citizen helps his neighbors in need. A good citizen respects all the social laws and follows traffic rules without flaws. Okay, so my dear students, this beautiful stanza is giving us message. हमें किस चीज का मैसेज दे रहा है कि इसमें गुड सिटीजन्स का क्या बताई जा रही है, क्वालिटीज बताई जा रही है, उसकी खूबियां बताई जा रही हैं कि एक गुड सिटीजन क्या करता है, हमेशा अच्छे काम करता है और क्या करता है, अपने हमसायों की, जो उसके इर्द गिर्द घर के रहने वाले करीबी हैं, उनकी मदद करता है, ट्रैफिक के कवानीन का क्या रखता है, ख्याल रखता है और हमेशा अच्छे काम करता है। तो आप भी इंशाल्लाह एक अच्छे शहरी होने का सबूत देंगे। जो चीज़ आज इस लेक्चर में आपको पढ़ाई जा रही है तो आप उसे फॉलो भी करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे आए। A good citizen donates his warm clothes to the needy people when the winter wind blows. A good citizen does not break the line. That is why he gets a bright shine. Okay, तो आप इस जबरदस्त स्टैंजे में ये जो 4 लाइनें हैं वो हमें क्या बता रही हैं, इधर आप पिक में भी देख सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये तस्वीर आपको क्या बता रही है कि अगर आपके पास गर्म कपड़े हैं, किसी किस्म की भी कोई ऐसी चीज है जो आप डोनेट कर सकते हैं। डोनेट हमेशा किसे किया जाता है, वो नीडी पीपल, ओके, पुअर पीपल, जो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो न्यू चीज़ें ले। सर्दियाँ आती हैं या गर्मियों का कोई भी सीज़न आता है, कोई भी मौसम आता है, अगर हमारे पास चीज़ें हैं, अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, तो हमें उसे आगे डोनेट करना चाहिए। डोनेट चीज़ें वो की जाती हैं जो अल्लाह ताला की राह में दी जाएं और अच्छी नीयत से दी जाएं, अच्छे इरादे से दी जाएं। ओके, तो अ गुड सिटीजन डज नॉट ब्रेक द लाइन When we are queue, जब हम लाइनों में होते हैं, किसी भी बैंकिंग में या किसी भी जगह पे हम जाते हैं, इवन हम अपनी वैन में या स्कूल से जाते हुए, स्पेशली जब छुट्टी होती है तो आप लाइन में जाते हैं अपनी गाड़ी तक, या ही जो भी आपको कन्विंस लेने आती है, तो आप उस पे जब जाते हैं तो लाइंस बना के जाते हैं। तो अच्छा जो शहरी होता है, एक अच्छा स्टूडेंट कभी भी अपनी लाइन नहीं तोड़ता। तो ये उनकी क्या बताई जा रही है, खूबियां बताई जा रही हैं। सो नेक्स्ट स्टैंजे पे आए। Oh, look at little bugs moving in the pot. Because of them, we lose our health a lot. Ponder before throwing around your waste. A good citizen dumps the litter at a proper place. Okay, how these, did you judge one thing, my dear students? How these lines are so connected in rhythm and in intonation and rhyming. They are rhyming words like pot, lot, waste, place. Okay? हाउ, कैसे ये एक दूसरे से राइम कर रहे हैं, मिलते जुलते हैं। अच्छा, इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें ये कि बर्तनों पे जब अक्सर होते हैं ना, किचन में बर्तन पड़े हैं या कहीं पड़े हैं, हमेशा हमेशा बर्तन चाहे धुला हुआ भी है, उसे वॉश करके, दोबारा वॉश करके फिर इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, ये आप अपने माइंड में रखें बेटा, क्योंकि ये जो हेल्थ ख़राब होती है, हमारी सेहत ख़राब होती है, फिर हम स्कूल आने के काबिल नहीं रहते, और जब हम स्कूल नहीं आते हैं तो हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। ओके, तो केयरफुल रहा करें। घर में भी आपने ये मैसेज देना है कि बर्तन हमेशा धो के फिर इस्तेमाल करना है। और उसके बाद पॉन्डर बिफोर थ्रोइंग अराउंड योर वेस्ट, कि हमेशा सोच समझ के अपने जो वेस्ट मटेरियल्स हैं जो हमने ज़ाय करना होता है लिटर की सूरत में, तो हमने वो डस्टबिन में डालने होते हैं। सोच समझ के ही डाला करें कि कहीं वो ऐसे वेस्ट हो के आगे पीछे न जाएं। रास्तों में अक्सर पड़े होते हैं, गलियों में पड़े होते हैं, इवन अपने क्लासरूम में अगर आप जज करें, जो आप लाइक पेंसिल शार्प कर रहे हैं, कोई और वेस्ट है, रैपर फेंक रहे हैं अपने स्कूल में, तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखा करें, उनको एक प्रॉपर प्लेस में डाला करें। क्या होती है प्रॉपर प्लेस? डेफिनेटली डस्टबिन अवेलेबल होते हैं, तो आप उनको यूज़ किया करो। ओके, सो यू हैव टू कमिटमेंट टुडे दैट यू विल पुट ऑल वेस्ट इनटू द डस्टबिन एंड आल्सो यू विल गाइड अदर्स। Good job. Next paragraph पे आए। Wash your hands, put the litter in the dustbin. Hurry up, collect your things, clean up and begin. Sit together, don't fun your fellows with a pin. Respect others, be a good citizen so that you win. Okay, अब इस स्टैंजे पे क्या बताया जा रहा है? Wash your hands. You see there. हमें क्या करना है? वॉश करनी है हैंड। और ये तो वैसे भी सुन्नत है, सवाब भी होता है और एक नेक काम भी है, हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। आदाब में भी है ये, अगर आप खाना खाने से पहले हाथ धोएं, खाना खाने के बाद भी हाथ धोएं,
कोई भी चीज़ अगर आप खाने लगते हैं तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, हाथ धोने का करना है। और अब वो क्या कह रहे हैं, हरी अप, कलेक्ट योर थिंग्स एंड क्लीन अप एंड बिगिन, कि अभी जहां आप बैठी हो ना, अभी फौरन शुरू करो और देखो अपने इर्द गिर्द के आपकी जो चीज़ें फैली हुई हैं जो आपके काम की नहीं है। आप जस्ट इंग्लिश का लेक्चर पढ़ रहे हो तो आपके पास वो बुक होनी चाहिए। एक्सेप्ट ऑल दोज थिंग्स मस्ट बी इन योर बैग, अपने बैग में रखें। ओके, ऐसे जो खिलार बना के आप लोग बैठे हुए होते हो वैसे नहीं बैठते। तो फौरन ये सारा कुछ करें और मिनट में क्लीन अप करें, हरी अप हरी अप। ओके गुड। सिट टुगेदर, डू नॉट फन योर फॉलोज विद अ पिन। अब वो क्या कह रही है कि एक साथ मिलजुल के बैठे और किसी का मजाक ना उड़ाएं। और बड़ों का क्या करना है, हमेशा एहतराम करना है, टू बी गुड सिटीजन सो दैट यू विन। और हमेशा जिंदगी में आगे वो इंसान जाता है, कौन से इंसान जाते हैं, कौन से स्टूडेंट जाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, यस, जो दूसरों का ख्याल रखते हैं, दूसरों की इज्जत करते हैं और अपना काम खुद करते हैं और अच्छे से सलीके से रहते हैं। ओके, तो हमने भी जिंदगी में आगे जाना है इंशाल्लाह, तो हमने भी सलीके से रखना है। गुड। सो नेक्स्ट देखते हैं क्या बताया जा रहा है नेक्स्ट स्टैंजा में। Our earth can be a shining place for us all. Come and join. Give everyone this call. Protect the earth. Stop littering on the ways. Otherwise, it will be a trash bag in the coming days. वाओ, इसमें एक जबरदस्त मैसेज दिया जा रहा है बेटा, हमें अलर्ट किया जा रहा है। अगर हमने केयर ना की तो हमारी ये जो खूबसूरत ज़मीन, जो अल्लाह ताला ने हमें ये खूबसूरत ज़मीन का टुकड़ा हमें अता किया है, तो उसका क्या होगा, वो तो एक क्या बन जाएगा, गंदगी का ढेर बन जाएगा, ट्रैश बैग बन जाएगा, बहुत जल्द बन जाएगा। जो हमारा हाल है, जो हम अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखते, अपने इर्द गिर्द की सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं, तो इससे क्या होना है, डेफिनेटली ये ज़मीन बोझ बन जानी है, भर जानी है, गंदगी से भर जानी है। और जब गंदगी ज़्यादा होती है तो क्या होता है, बीमारियां फैलती हैं। तो केयर करें, खुद भी इस पे अमल करें और दूसरों को भी बुलाएं, अपने इर्द गिर्द फॉलोअर्स को भी इनवाइट करें कि हमने ये करना है, अपने से भी कमिटमेंट करें और अपने इर्द गिर्द जो आपके फेलोज हैं उनसे भी कमिटमेंट करें कि हमने अपने इर्द गिर्द को, अपने स्कूल को, अपने क्लासेस को, अपने घरों को और हमारे इर्द गिर्द का माहौल जहाँ जहाँ हम जाते हैं तो हमें उसे साफ सुथरा रखना है। ओके गुड। सो नेक्स्ट लास्ट वन, second last stanza is there. Muddy microbes block our sewerage pipes. The good citizen fights with the diseases of all types. The elegant greenery on our planet is dying. If we clean it up, the infection will start crying. Okay, यहाँ क्या बता रही हूँ, कह रही है कि muddy microbes block our sewerage pipes. जब गंदगी फैलती है तो हमारे सीवरेज पाइप्स क्या होते हैं, जो हम नालियों के लिए पाइप लगाते हैं, हमारा जो वेस्ट पानी है वो उसको लेके जाते हैं, तो वो ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। वो क्यों बंद होते हैं, क्योंकि जो हमने ये लिटर फैलाया है वो उड़ के या किसी न किसी जरिए से वो उन पाइप्स में जाते हैं और पाइप्स बंद हो जाते हैं। जब पाइप्स बंद होती हैं तो क्या होगा, क्या होगी, डिफरेंट डिजीजेस, हमें हर किस्म की बीमारी लगेगी। डेफिनेटली जरासीम होते हैं और जरासीम से बीमारियां फैलती हैं, तो हमें केयर करनी चाहिए। द एलिगेंट ग्रीनरी ऑन अ प्लैनेट इज डाइंग। तो हमारे प्लेनेट पे जो इतनी खूबसूरत सब्जा है, ग्रीनरी है, डेफिनेटली वो ख़त्म होती जा रही है। लेकिन जब हम इन्फेक्शंस को ख़त्म करते हैं, अपने इर्द गिर्द को साफ करते हैं, तो जरासीम भी चिल्ला उठते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हम कहाँ जाएंगे। तो केयर करें कि अपने इर्द गिर्द को, अपने माहौल को साफ सुथरा रखें। ओके, अब लास्ट स्टैंजा की तरफ आते हैं। वो क्या बताया जा रहा है, Good manners and deeds never let you fall. A good citizen's heart is ever kind to all. Respect your elders and care about yourself. A good citizen always proud of himself. Yes, तो लास्ट स्टेंजा में क्या बता रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, यस, गुड मैनर्स और सारी चीज़ें जो हम पीछे पढ़ चुके हैं उसका निचोड़ है कि अगर हम ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो हम क्या होते हैं, नेवर लेट यू फॉल। कभी भी हमें जो हमारा अच्छा काम है वो झुकने नहीं देता है, हमेशा हम सर बुलंद करके फ़ख्र से रहते हैं कि हमने ये अच्छा काम किया। तो हमेशा आप भी चाहोगे कि आप भी फ़ख्र से रहो, इज़्ज़त से रहो, शान से रहो। तो वो कैसे रहोगे, जब आप अच्छा काम करोगे। ओके, और अच्छे काम कौन से हैं, एक अच्छे शहरी की ये जो काम है जो मैंने आपको बताए हैं, अपने हमसायों की मदद करता है, नीडी लोगों की मदद करता है, अपने इर्द गिर्द को साफ़ सुथरा रखता है, अपने आप को साफ़ सुथरा रखता है, खाने से पहले भी हाथ धोता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एक अच्छा शहरी बनाती हैं। ओके, तो आज कमिटमेंट करें, वादा करें अपने टीचर के साथ भी, मेरे साथ भी, कि आपने खुद को भी साफ रखना है, अपने स्कूल को भी, अपने क्लासरूम को भी, और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जो भी आपसे कनेक्टेड लोग हैं, आपने उनको भी कहना है कि हमने अपने इर्द गिर्द के माहौल को नीट एंड क्लीन रखना है। ओके गुड। सो वी हैव completed our today's lecture. So tomorrow with our new lecture number 1, we will start new this lesson. So till that, stay blessed. Thank you so much. Allah Hafiz.